and welcome. You're watching Newsx. I'm Shivani Singh. IndiGo has cancelled over 600 domestic and international flights across the nation, impacting travel plans of hundreds of passengers. This disruption has caused chaos at airports, with passengers struggling to get their luggage for over 12 hours, no food and no water. With complaints mounting on social media and customers demanding clarity, the airline is now facing scrutiny, not only over flight cancellations, but also over refund deductions. Let's now take a look at the procedure for applying for refunds in case your flight has been cancelled, because remember that when a flight gets cancelled, you are entitled to certain refunds. But how are you going to get that refund? Let's in fact take you through that process. So this is how you open IndiGo's website on any of your devices. This is the home page that will actually come up on your screens, and then you go on to trips over here. So this is a tab. You will have various tabs on your screens. You go and press on clicks on trips, and when you go on trips, you have to obviously you will come to plan B. This is the click on plan B, and this is the screen that will actually come on your devices. So when you click on plan B, you will also have the PNR or the booking reference and your email or your last name. So it's very similar to the check-in procedure that you have, in that you have to enter your PNR or your booking reference in this space, and also you enter your email and your last name in this, and then you click on retrieve booking, so that they can understand what booking you are trying to get a refund for. The next step is this: your itinerary will actually come up on the page. Over here you can change the time or the date of your flight, or cancel and process the refund. So this is your flight schedule that comes up, your itinerary, when you put in your details, and this is what you will get. So over here what you can do is you can either cancel your booking, get the refund, you can change your flights as well. Alright, so this is what it actually looks like and how to in fact get your refunds. So that is when you access IndiGo's website on your online devices. Let's take this discussion in fact forward. Joining us on the broadcast is Dr. Vandana Singh, aviation expert. Thank you so much, ma'am, for joining us on the broadcast. Very good evening to you. But it does not seem to be a very good evening for lakhs of passengers who are still stranded at the airport, ma'am, across the country. And now, even though we have the Civil Aviation Ministry stepping in, do you believe that those measures will be implemented to the T, or do you see some lapses that are coming to the fore? Thank you, Shivani, for having me on your show. It's an honor as always. I would like to state first the people who are passengers who are continuing to be harassed. This continuation has now rolled on, as we know, to day 6. It started on day 2. Today is day 6. Today is Saturday, and it's very, very sad to see the state of affairs. Secondly, it's very good that through your channel you are showing to people how do they go for the refund, how do they go for the change of the flights, and all of that. But my question is, somebody who has no clue, somebody who's traveling, a senior citizen, a disabled person, and all of people who are running for job interviews, or somebody is losing a family member, and people who are not so good with technology, how are they going to go and claim for the refund? So to me, it looks, even though the government has given a very strict timeline and said that by 7 or 8 p.m. tomorrow, this all needs to be done. The refund needs to be completed. The rebookings need to be done. This chaos needs to stop. The baggages need to be handed over. But if
this will happen. It remains to be seen. To me, it looks it will not happen to the T, because people who are not good with tech, they will need support staff. So IndiGo actually should be supplying customer services assistants and people to really help for the passengers to go and claim their refunds and whatever rerouting they want. It's not an easy task, ma'am. You're seeing the kind of chaos in all the airports, and it is looking a cumbersome one to me. They may succeed in applying, but when the refund comes remains to be seen. IndiGo has made a statement saying that it will all be done, but the apology has come too little, too late. They could have controlled this situation on the second day itself, and they should have not behaved like a spoiled school boy over here. This is what they have done, where exactly you're a topper of the school, you have of your class, you have 62% market share, and what you do is you go and arm twist the class teacher or the principal here, in this case the government, and say that I'm not going to give in. I need one more extension for FTTL, one more extension, and I'm going to see how you're going to survive without me. So this is a very shameful experience that we've had by IndiGo. Total mismanagement from the top, and the passengers who are waiting to get their refunds, I hope they do within the next week. But if I was to say that they're going to get it by 8 p.m. tomorrow, it's not going to happen, ma'am. Over to you. So you believe that that is not going to be implemented, those deadlines that have been set in place by the government, by the ministry, it will not be implemented to the T. Ma'am, also when you're talking about arm twisting, IndiGo seems to have had that relaxation in implementing those norms as well. It's risking pilot safety, it's risking passenger safety. Do you think that extension that it is asking for, it's saying that everything will normalize by December 15th, do you think that is possible? Something that IndiGo couldn't do in 18 months, will that be possible in 15 days? Realistically speaking, no, but they have no choice now, you see, because the government also has had enough. But ma'am, pilot training, re-rostering. Yeah, I'm coming to that. Yes. I'm coming to that. Yes. Exactly what you're saying. This is why this is going to stretch to 10th February, because IndiGo, as I was stating earlier to your channel as well, it's having this lean, mean, thin strategy, which is applying to pilots as well, which is very shoddy. Their crew resource management is not in order. It is a well-known fact that they had a freeze on the hiring of pilots, and when the winter schedule kicked in on October 26th, and they were adding flights by 6% by about 821 or 826 flights, why the hell did they not hire the pilots? Why did they not have the people in place? Why is it that the deadhead crew is flying everywhere? Because they are so exhausted, not knowing when they will get the rest. So this is not good what IndiGo has done. It's not in the interest of the country, and it shows us and India as in a very poor image as a rising economy. So becoming the third largest or the fifth largest right now aviation market, it's a shameful experience. In my view, no airline should be allowed to go with such a dangerous market share. In any industry, this is applicable, because then they will actually start dictating. This should not be allowed. And now IndiGo has to be brought to task, and every government mandate that's been given to them, they have to answer, and they have to do the submission, and they should be penalized. All right. Over to you, ma'am. All right, ma'am, I'll request you to please stay on with us as I go across to my colleague Akshay Meharana, who's joining us from the Bhubaneswar airport to give us the ground situation, what it is like. Akshay, आप वहाँ पर हैं, आपके सामने मैं देख रही हूँ, आप काउंटर के पास भी हैं, लोगों से बात करिए। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने स्टेप इन किया है, उन्होंने अनाउंस किया है कि प्राइस भी नहीं राइज करेगा, उन्होंने कहा है कि रिफंड भी आने चाहिए संडे तक। क्या लोगों को लगता है कि ये सब इम्प्लीमेंट हो पाएगा और क्या उन्हें रिलीफ मिला है अभी?
देखिए, तमाम बारे में बातचीत करेंगे लोगों से, और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे लोग जो हैं कहीं ना कहीं, अब जो डिपार्टमेंट अब बोल चुके हैं, लेकिन लोग कितना, लोगों को ये तमाम बारे में लोग क्या सोच रहे हैं कि आप कहाँ जाएं। अच्छा, आपकी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है? अच्छा, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी फ्लाइट कैंसिल हुआ है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों की कहीं ना कहीं फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से लोग बहुत बेहद परेशान में यहाँ है, और बेहद परेशानी उनको झेलना पड़ रहा है। बातचीत करेंगे। आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गया है? 8 बजे का टाइमिंग है। अभी डिपार्टमेंट ने बोला है कि जितने लोगों की फ्लाइट कैंसिल होगा उनकी रिफंड आ जाएगी, और जो फ्लाइट की रेट है वो भी स्टेबल रहेगी। क्या आपको कहना है इस बारे में? अभी तो मैं जस्ट आया हूँ, जी देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं और उनसे भी बातचीत करेंगे। मैम, कहाँ से आए हैं? मुंबई। जी, देखिए, मिनिस्ट्री बोला है कि जो रेट है वो बढ़ेगा नहीं, और जो आपकी फ्लाइट है जो कैंसिल हुआ है उसकी रिफंड आपको मिल जाएगी। क्या बोलना है इस बारे में? रिफंड तो हमें आया नहीं है, और हम मुंबई की फ्लाइट देख रहे थे तो कोई भी एयरलाइन का फ्लाइट है नहीं। हमने अभी एक फ्लाइट बुक किया है, बट वो बहुत अराउंड 25,000 का बुक है। उसके ऊपर से अभी वो है मंडे शाम का, तो हमें 2 दिन हमारे में रहना है। अच्छा, तो उसका रिफंड तो आएंगे, आपको रिफंड हो नहीं रहा है। अच्छा, लेकिन आपको रिफंड मिलेगा। विभाग की कहना है कि रिफंड आपको मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं जो आपकी जो टिकट है, टिकट की जो रुपए है ज्यादा देना पड़ रहा है, वो भी स्टेबल रहेगा। पता नहीं, रिफंड मिल तो नहीं रहा। देखिए, कुल मिलाकर यही है कि लोग अब इंतजार कर रहे हैं, लोग अब यही प्रतीक्षा कर रहे हैं कि लोगों की जो फ्लाइट है, फ्लाइट कैसे कैंसिल ना हो, और फ्लाइट सही समय से लोगों को मिल जाए। इसीलिए बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं, जी लोग यहाँ बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल अक्षय, हम आपके पास आते रहेंगे अपडेट्स के लिए। लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस दिस पीस ऑफ ब्रेकिंग न्यूज दैट्स कमिंग इन। इंडिगो एयरलाइंस has now issued an official statement amid the ongoing crisis. The statement reads, and I quote, "IndiGo is working to bring its operations back on track across the network. Our teams are focused on stabilizing schedules, reducing delays and supporting customers through this period." Today, the number of cancellations has dropped below 850 flights, much lower as compared to yesterday. We are continuously working towards reducing this number progressively over the next few days. We are also addressing all customer refunds on priority. We are also working closely with all airports and partners to ensure timely updates are provided to customers at terminals, on our website and via direct notifications. We strongly urge our customers to check the latest flight status on our website before proceeding to the airport, as we are diligently working to add more resilience to our processes. For refund assistance, please visit our refund site or contact our customer support. We would also take this moment to thank all IndiGo employees and ground staff for their tireless support and commitment to our customers. IndiGo is sincerely apologizing for the inconvenience caused to their customers, and it remains focused on restoring normalcy across all the operations at the earliest. Now, you have to remember that this is in fact the official statement that has in fact come out from IndiGo. They are stating that they will try to reduce the number of cancellations from 850 to 600 today. In fact, joining us live on the broadcast is my colleague Renik Datta, who is joining us from the Kolkata airport. Renik, कोलकाता में क्या हाल है? क्या लोगों को रिलीफ मिला है कुछ? क्योंकि अब मिनिस्ट्री ने स्टेप इन किया है, लोगों से बात करिए, क्या उन्हें नए जो रूल्स आए हैं उनके बारे में पता है?
हाँ एकदम ही। देखिए मैं एक बार पहले दिखाऊंगा ये जो फ्लाइट इंफॉर्मेशन बोर्ड है, इसमें देख सकते हैं कि अभी भी बहुत सारे इंडिगो का जो फ्लाइट्स है उसको डिले किया गया है, बहुत सारे फ्लाइट जो है उनको कैंसिल किया गया है। अभी भी लोगों के मन में परेशानी है, बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल है कब उनका फ्लाइट मिलेगा, कब वो क्या जा। एक बार बात करेंगे, मैं कोशिश करूंगा। सर इंडिगो का फ्लाइट था आपका? हमारे दो बच्चे, दो छोटे इन्फेंट के साथ में आए हैं और हम लोग खड़े हैं, नो दे विल बी एबल टू फ्लाई और नॉट। कल हमारे कुछ गेस्ट थे, वो 9 घंटा बैठे थे, तो दे आर ऑल स्ट्रगलिंग। इसीलिए जब तक फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर जाता है हम यहाँ खड़े रहेंगे। तो कब आए हैं, अभी क्या स्टेटस है फिलहाल? हम लोग अभी 1.5 घंटा पहले आए हैं, 7:30। वी डू नॉट नो, दिखा रहा है ऑन टाइम, but whether it will take out on time or not, we don't know. So we will continue to wait unless the flight takes off. देख ही सकते हैं कि हम जनता की तरफ से क्या कहा जा रहा है कि वो लोग डरे हुए हैं, क्योंकि अभी भी फ्लाइट, बहुत सारे फ्लाइट है, जैसे कि देख सकते हैं कि कैंसिल दिखा रहा है, डिलेड दिखा रहा है, मगर जो भी ऑन टाइम फ्लाइट है उसको लेकर भी लोगों के मन में परेशानी है। क्या वो ऑन टाइम रहेगा, क्या वो टेक ऑफ करेगा, या तो फिर से उसको भी डिले। मैं और भी बात करने का कोशिश करूंगा। सर अभी ये जो फिलहाल सिचुएशन चल रहा है, इसमें अभी मिनिस्ट्री की तरफ से भी हस्तक्षेप किया गया है, तो क्या उम्मीद रख रहे हैं, क्या ये बेहतर होगा? देखिए जी, उम्मीद तो पूरी करते हैं कि कल तक या मैक्सिमम मंडे तक पोजीशन नॉर्मलाइज हो जानी चाहिए। कल से स्थिति आज बेटर है। हालांकि हमारे तो घर में शादी थी, बहुत सारे लोगों की फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, टू द एक्सटेंट कि हमारे घर के 3 बंदे जयपुर तक बाय कार गए हैं अभी आज मॉर्निंग में, और 2 या 3 फैमिलीज दे आर स्टिल स्टेइंग बैक। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जी। होपफुली हमें उम्मीद यही करते हैं कि कल या मंडे तक चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। तो अभी क्या आपका कोई परिवार वाले ट्रैवल कर रहे हैं इंडिगो से? हाँ जी, मेरी डॉटर अभी जा रही है, उसी के लिए वेट कर रहे हैं हम लोग कि कंफर्मेशन आ जाए कि शी हैज़ पास द सिक्योरिटी चेक, तो उसके बाद हम अपने घर जाएंगे। अदरवाइज वी आर वेटिंग। पता नहीं चल रहा आजकल की अंदर जाने के बाद भी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द न्यूज़ फ्रॉम देम। एकदम ही देख सकते हैं कि आज सुबह जिस तरीके का तस्वीर सामने आया था कि लोग चेकिंग करने के बाद फ्लाइट कैंसिल हो रहा था, फ्लाइट डिले हो रहा था, उसी को लेकर लोग अभी भी डरे हुए हैं। और भी बात करूंगा। सर इंडिगो से ट्रैवल कर रहे थे? जी इंडिगो से ट्रैवल कर रहे थे। क्या स्टेटस है? अभी हमारा कैंसिल्ड हो गया है। कल का भी बोल रहे हैं कोई कल फ्लाइट कोई फ्लाइट नहीं उड़ेगा। परसों का ऑप्शंस दे रहे थे, पर परसों तक तो लेट हो जाएगा। मुझे एक मेरा फैमिली फंक्शन अटेंड करना था और मैं सुबह आया था आइजोल से यहाँ तक के लिए, वहाँ भी 2-3 बार डिले हुआ। जो हमारा फ़्लाइट उड़ना था 10:30 बजे के करीब, वो उड़ा 12:30 के करीब में, और यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँचने के बाद कनेक्टिंग था, वो भी कैंसिल हो गया। तो वो लोग बोल रहे हैं कि आप 8 तारीख का ले सकते हो। उसमें 8 तारीख का भी 3-4 ऑप्शंस दिए हैं, पर फिर बोल रहे हैं कि सर ये भी फुल है, ये भी फुल है, ये भी फुल है। तो मतलब यही है कि सर्विस अभी ठीक नहीं चल रहा है इंडिगो का। हाँ, तो अभी ये पूरा मैटर में मिनिस्ट्री भी हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो क्या? ऑलराइट रैनिक, मैं आपके पास आते रहूंगी अपडेट्स के लिए। इनफैक्ट कॉलर हैज जॉइंड अस ऑन द ब्रॉडकास्ट। ही इज जॉइनिंग अस फ्रॉम अलीगढ़। नरेंद्र जी, आप क्या एक पैसेंजर हैं? आपको क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं, हमें ज़रा बताएं। लग रहा है कि हम जाएं या ना जाएं, या हमको वहाँ क्या हाल करना पड़ेगा, हमें कंफर्म ही नहीं हो रहा कि अभी आप वेट करिए, बात करिए, वेट कर। कोई वो अच्छा जो कस्टमर केयर है वो फोन ही नहीं उठा रहे। आपका हमने कहीं पढ़ा था तो आपका नंबर इसीलिए आपसे कॉल की कि आप किसी तरीके से हमारी बात को वहाँ तक पहुँचा सकें। जी बिल्कुल नरेंद्र, हम आपकी बात गवर्नमेंट तक भी पहुंचाएंगे। लाखों लोग अभी टेलीविजन स्क्रीन्स देख रहे हैं। आप अभी कौन से एयरपोर्ट पे हैं? आपको कोई कैंसिलेशंस, रिफंड कुछ भी आपको पता चला है इंडिगो की तरफ से? इंडिगो की तरफ से कुछ नहीं पता लगा। और सर नरेंद्र सर, जो अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स भी डाले, उन्होंने बोला है रिफंड आपको मिल जाएगा कल शाम 8 बजे तक। रिफंड तो हमें मिल जाए या ना मिले, उसका क्या फायदा जी? हमें तो जाना था, हमें जब जा ही नहीं पाए तो रिफंड मान लिए 10-20 हजार का हमारे टिकट में खर्च हुए, वो मिल भी गए और अभी कंफर्म ही नहीं है। अभी पहले हमें तो ये तो पता लगे रिफंड से ज्यादा तो हमारा वो खर्च हो जाएगा जो हम यहाँ से अटेंड करने के लिए जाएंगे। जैसे ये हमको जो है, हम अलीगढ़ से बोल रहे हैं और जाना है हमको दिल्ली से हैदराबाद, तो दिल्ली जाएं या ना जाएं? जी, और इस बारे में आपको इंडिगो से कोई अपडेट आ रही है? कुछ नहीं, नॉट द लीस्ट।
आपने उनके वेबसाइट पे ये फाइल किया है ग्रीवांस, क्योंकि इंडिगो बोल रहे हैं कि वो सारे जो कंप्लेंट्स है उसको देख रहे हैं। कुछ नहीं, उनको तो अपने आप ही जिन जिन की टिकट है सबको इन्फॉर्म वैसे ही करना चाहिए। जी, और आपके साथ कोई और भी ट्रैवल कर रहे हैं? हाँ, मेरी वाइफ है। अच्छा, तो आप लोग को बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम हो रहा है कि आगे का क्या करना है ये भी नहीं पता चल रहा है? नहीं पता। आपकी क्या गुजारिश है गवर्नमेंट की तरफ से या इंडिगो की तरफ से नरेंद्र जी? हमारी डिमांड ये है कि हमको नंबर 1 तो जा सकती है या नहीं जा सकती, कंफर्म है या नहीं है। नहीं जा सकती तो कम से कम हम कोई दूसरा तरीका सोचें, गाड़ी से जाएं या से जाएं या ना जाएं, कैंसिल करें हम अपना जाना, घर में बैठे चुपचाप। जी बिल्कुल नरेंद्र, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत। इनफैक्ट लेट मी rope in Dr. Vandana Singh again into this discussion. Dr. Singh, we are looking at such a crisis. We are looking at the government stepping in. We are looking at a slew of measures. But this is for passenger comfort because passengers have been suffering since the past few days. What action should be taken against IndiGo? Who is accountable for this mess that has been created, and who will make sure that this doesn't happen again? Thank you. That's an intelligent question, and that is what that I would like to answer. First of all, there you go with exactly what I said. Look at the plight of the passengers. They don't have any information from IndiGo as we speak. So in the first place, how is all this going to happen by 8 p.m. tomorrow night? The government, of course, has given a very clear directive. But now the government has to bring these people, IndiGo, to task, which means a CEO has to come. Maybe the entire top management has to be brought to task as to why this chaos has happened, why this lapse has happened, why have people been chokehold. I call it chokehold here, where people have totally lost out on just everything, not just fares, they've just totally lost out on anything that they had to do. At least the basic thing of communication should be there. Why were they not communicated? Why were the proper messages, emails, WhatsApp, etc. not given to them in Hindi and English? And here we are talking of a refund happening by tomorrow. It's not happening. I've seen now 3 airports. You've seen Bhubaneswar, you've seen Kolkata, you've seen a gentleman speaking from Aligarh. Therefore, the government has to summon the IndiGo top management to them, ask for explanations in writing, and penalize them and take an assurance for them that this will not happen again, and each and every passenger is going to get his or her refund with a personalized apology letter. What you're reading here is something like a commonly worded, blah, 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 sorry for this, IndiGo apologizes for this, etc., etc. No, this is not what the people want. They are infuriated. And even as I speak, I'm on the way in a car where I should have been flying all the way down from Jaipur. So the question is, why is this happening? Incorrect. And IndiGo has to be brought to task. They cannot be this cannot be just one incident where they can go scot-free, ma'am. They cannot go scot-free. They have to be held accountable. All right. In fact, also joining us on the broadcast is Manish, who is calling in from Thiruvananthapuram. Manish, आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? आप क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं? क्या आपको टिकट रिफंड नहीं मिल रहा है या आप ट्राई कर रहे हैं दूसरी फ्लाइट्स बुक करने का? एक्चुअली मेरी फ्लाइट है तिरुवनंतपुरम से अहमदाबाद की ऑन मंडे, दिस मंडे, अपकमिंग मंडे. राइट. But there is no any update from IndiGo Airline that my flight is scheduled or not. All right. And Manish, are you going from Thiruvananthapuram? Is this work related or do you have an emergency? Yeah, definitely. And what I'm going to ask to the IndiGo Airline that what should I for my next journey? Manish, there's some issue with your connection. However, I'll ask them to reconnect that line if they can. But if you can hear me, IndiGo has not responded to your queries, Manish?
Yes, actually, my flight is on Monday from Tiruvananthapuram to Ahmedabad via Bangalore. Yeah, so has IndiGo given any intimation of any sort? Will it be No, cancelled? not any intimation given by IndiGo. Then what should I do for my next journey to Monday? Right, I am confused. Not even I am, even like me, all passengers are confused what to do in next 1, 2, 3 days. All right. Thank you so much for calling us in over here, Manish, and sharing those problems that you're facing currently. Joining us also live on the broadcast is my colleague Akshay Maharana from the Bhubaneswar airport. Akshay, आप वहाँ पर लोगों से बात करिए, उनसे पूछिए कि क्या अभी भी बहुत सारा कंफ्यूजन है, क्या इंडिगो के तरफ से कोई भी तरीके का इंफॉर्मेशन आ पा रहा है उनके पास? देखिए अभी कहीं ना कहीं अभी तमाम जो लोग हैं वो लोग पीछे देख रहे हैं कि कितने लोग अभी भी यहाँ इंतजार कर रहे हैं। अभी भी टिकट काउंटर जो इंडिगो के टिकट काउंटर है, टिकट काउंटर के सामने यहाँ खड़े हुए हैं, तो तमाम लोग कर रहे हैं कि उनकी जो फ्लाइट है, फ्लाइट उनकी कैंसिल हुआ है या नहीं, तमाम बारे में बातचीत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अब तमाम कंफ्यूजन के जो पैसेंजर यहाँ खड़े हुए हैं, तमाम बारे में बातचीत कर रहे हैं कि कैसे उनकी जो फ्लाइट है, फ्लाइट की तमाम जो बारे में जो कुछ है उन पहुंचे, तो कहीं ना कहीं लोगों से भी बातचीत करेंगे, लोगों की जो तकलीफें हैं उनको भी सुनने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे। क्या कहाँ से है? मैं यहाँ बगल से उड़ी चटनी से। अच्छा, आपकी फ्लाइट कैंसिल हुआ है? कैंसिल अभी तक हुई नहीं है, टाइम पोस्टपोन दिखा रहे हैं, 7 बजे की फ्लाइट 8:20 दिखा रहे हैं, पर अच्छा, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कैंसिल है कि क्या है। क्या उम्मीद है आपको? लगता तो नहीं आज जा पाएंगे, जो इनका सिचुएशन चल रहा है 4 दिन से, हमको लगता नहीं, उम्मीद नहीं है, पर आए हुए हैं, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो घर वापस जाए। तो टिकट कैंसिल होगा तो सरकार तो बोले हैं कि आपको रिफंड मिल जाएगा। रिफंड सब चीज का सोल्यूशन नहीं है ना। ऑल राइट, थैंक यू सो मच अक्षय, हम आपके पास आते रहेंगे अपडेट्स के लिए, बट थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दैट ground report. In fact, that's it from us on this bulletin. We'll see you after this short commercial.